Namaste and welcome everyone for this third day of our series exploring conscious connections. So we started with self and others, then we moved to sort of an organizational workplace context, larger circle. Now we are going to something maybe a little more larger, but also quite intimate, also in many ways, which is connecting with culture. So before we get insights from Mother and Sri Aurobindo, particularly Sri Aurobindo, because he was a masterful cultural exponent, cultural critic. He has written so much about Indian culture as well as Western culture. He was kind of like the best of both worlds, the deepest spirit of both the Western culture and Indian culture he had assimilated within himself. So before we do that, I want to kind of just ask a simple question. What do we understand by the word culture? कोई भी जिसको भी कोई इंस्पिरेशन आ रही हो, प्लीज शेयर. कल्चर का मतलब क्या है जब हम वर्ड कहते हैं कल्चर? यस. कल्चर का जो शब्द है हिंदी में उसको संस्कृति कहते हैं और यह संस्कारम शिक्षते सा संस्कृति कि जो हमको संस्कार सिखाती है, जीवन जीने का तरीका सिखाती है, वो संस्कृति है. और हमारा इंडियन कल्चर हमको क्या पूरे विश्व को जीवन कैसे और किस तरीके से जीना चाहिए और हमारा फाइनल ट्रुथ क्या है जीवन का, ये सब हमको इंडियन कल्चर से ही सीखने में मिल सकता है. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू. सो आपने लिटरली कल्चर का जो एक सही मायने में इंडियन सेंस है ना, क्योंकि कल्चर तो हम उस तरह से भी यूज करते हैं, दही जमाने के लिए भी कल्चर चाहिए होता है, करेक्ट? या कोई किसी तरह की कुकिंग में भी कल्चर यूज्ड होता है, राइट? तो कल्चर इसका एक्चुअली इसका मीनिंग लिटरली हम समझ नहीं सकते हैं जब तक हम भारतीय परंपरा से नहीं देखते हैं. जो सो आई एम रियली हैप्पी कि आपने वही सीधा पॉइंट वही किया, संस्कृति से उसको जोड़ा. दैट इज द करेक्ट वर्ड एक्चुअली. सो यस, वेरी नाइस. और कोई और थॉट कल्चर से माइंड में किसी के आ रहा हो? जस्ट पुट द फोन ऑन साइड. Any other thought about what we understand by culture? Yes. Culture means which is relevant to our roots. For example, if we are talking about the Marwadi culture, we have in blood that we have to save money, and if I am related to the subject of my economics. Yes, yes. So, purely relevant to the saving of money. So you're bringing in the more material aspect of culture, which is also important, but I think you're also bringing in the diversity aspect कि different regions में different तरीके का culture because of different maybe approaches to life emerge होता है. So that is also very important, the idea of diversity within a culture. Yes, ma'am. What I feel is culture, when we say we are talking about the practices we follow in a particular area, in different areas basically. Like we talked about the Indian culture. So what are the common practices which we find beneficial for the society is one area. Like we have talked about the Marwadi culture. Similarly, if we say like in our school we have a different culture. Right? We have different practices which we follow for the growth of the children. Similarly, in different areas, we have some different or some common practices which we follow for the benefit of that particular area. So I think by culture, we can actually diversify this term in this way. Okay, very good, very good. So I think आपने जो अभी कहा, पहले भी जो सर ने कहा, एक और इमर्ज होता है पॉइंट कि कल्चर का कनेक्शन
आइडेंटिटी से भी है, बिकॉज यू टॉक्ड अबाउट ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन और गिविंग, जो जैसे कहते हैं ना, कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस, कस्टम्स टू द न्यू जनरेशन, टू द यंगर जनरेशन. So it has connection with continuity, it has connection with identity, individual identity, group identity, yes, and practices, the practical aspect. Any other point? Maybe we can take one more point and then we'll move on to other things. What about religion? Is religion at all part of culture? Or religious thought, philosophical thought? Yes? Yes, ma'am had some insight into that. रिलीजन को जो है वो हम दो तरीके से समझ सकते हैं. एक तो होता है हमारी आत्मा का स्वधर्म, कि जो हम कुछ न कुछ एम लेके आते हैं अपनी सोल के साथ, जिसको हमें बर्थ बाय बर्थ कंप्लीट करना होता है और उस फाइनल अल्टीमेट ट्रूथ तक पहुंचना होता है. और एक रिलीजन होता है जो फिलोसॉफीज अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होती है, उनके जो दर्शन है जिनको हम फॉलो करते हैं, दैट्स आल्सो कॉल्ड रिलीजन. Yes. Okay. Okay. So इन दोनों ही पॉइंट्स को अगर हम अपने समक्ष रखते हैं, is it fair to say that both these points can be aspects of culture of a people? Yes, correct. Okay, good. Thank you. Yes, very nice. So again, if I were to assimilate everything that you have said, all of you, you really have, in a way, explained what Sri Aurobindo has written in one sentence, but uska aapne explanation already de diya hai. What Sri Aurobindo writes about is ki culture of a people can be understood as the consciousness of life. जीवन की चेतना जो है, जीवन का isness जो है, consciousness, the very consciousness of a people's life, collective life, which expresses through three instruments, or in three ways rather, in three aspects. और वो तीन aspects वही हैं जो हमारे individual, जिसे हम अपने आप को understand करते हैं. The inmost one is soul, then there is mind, then there is body. Typically वेस्टर्नर माइंड या मोर मॉडर्न माइंड कहना होगा, क्योंकि वेस्ट और ईस्ट अभी कोई ऐसा अलग रहा नहीं है. So much mixing has happened. So a lot of our upbringing in the modern age has been influenced by the more rational approaches to life, जो वेस्ट का एक होल्ड रहा है. So generally we would say body, mind और soul, कि मेरे पास एक soul है. No, the Indian way would be that I am a soul with mind, emotion and body as its instrument. तो उसी definition से वो culture को भी explain करते हैं. A culture expresses itself in three aspects. The soul of a people, the mind of a people. Mind में ही हम emotion को मतलब इस context में include कर लेंगे, या body में भी, because body is also connected with the vital emotion, the matter, and the physical and vital are so closely connected. So in three ways we understand a culture. So अभी जो बात हुई religion की, चाहे वो हमारा individual स्वधर्मा का understanding हो, या कि philosophical thought, highest spiritual thought जो हमारे ऋषि मुनि योगी आचार्य लोग कह के गए हैं, या जो अभी भी मॉडर्न एज में जैसे श्री औरोबिंदो, रमण महर्षि, श्री रामाकृष्णा, या ऐसे जो भी स्वामी विवेकानंद, जो भी ऐसा स्पिरिचुअल थॉट हमें अपनी विरासत में मिला है, ऑल दैट, और उससे जो प्रैक्टिसेस निकलती हैं, ऑल दैट is part of the soul of a culture. The highest aspiration of the soul of a people is reflected in the soul of a culture, जिसमें ये सारे aspect आएंगे. It is not narrow dogma, custom, creed, but it is the grandest, the highest vision जो लोग collectively जो उनकी विरासत है. और हमेशा
इंडिया में ये रहा है, इंडियन हिस्ट्री में रहा है। श्री अरबिंदो कहते हैं एक जगह पे कि द ऋषि, द सेंट, द हीरो, these are the natural products of Indian temperament, of Indian soil. इसीलिए India is the only land in the world, if you take a grand look at the entire world, जहां हर एज में नए से नए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस करने वाले ऋषि, महात्मा, योगीज, मुनि आते रहे। Every time there is any kind of darkness, India will give up. जैसे इंडियन सॉइल से ऑटोमेटिकली पनप उपज जाते हैं, you know. So that is the truth, that is the soul of Indian culture. Spirituality, Sri Aurobindo says, is the master key of Indian mind. अब इतना ग्रैंड स्पिरिचुअल थॉट है, स्पिरिचुअल विजन है, और एक तरीके से नहीं, उसके कई एक्सप्रेशंस हैं। अगर अद्वैत है, कंप्लीट एब्सोल्यूट नॉन डुअल है, तो डुअल वे ऑफ लुकिंग एट, जहां पे वन नहीं है, देयर इज टू, क्रिएटर और क्रिएशन सेपरेट है। सो देयर इज सच अ ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ दैट। देन कम्स द माइंड ऑफ अ कल्चर, जिसमें आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी डिफरेंट तरीके से काम कर रहे हैं। ऑल ऑफ यू, आई मीन इन अ वे ऑल ऑफ अस, बिकॉज वी आर mental beings, you know, our identity is first and foremost as people with a more organized mind. I mean, creatures, life forms with more organized mind. बाकी life forms में mind इतना organized नहीं है, human से नीचे. So, whatever is the soul of a culture gets expressed through mind, जिसमें art, science, literature, poetry, architecture, mathematics, मेडिकल साइंस, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, जो भी कहें, जो भी हमारी यू नो कलेक्टिव लाइफ से प्रोड्यूस हुआ है, दैट इज द मेंटल एस्पेक्ट ऑफ द कल्चर, द माइंड ऑफ अ कल्चर। एंड देन कम्स द मटेरियल और द बॉडी एस्पेक्ट ऑफ कल्चर। उसमें जो हमने सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स अपनी आउटर लाइफ को मैनेज करने के लिए फॉर्मुलेट किए हैं, दैट इज द बॉडी ऑफ अ कल्चर. So, for example, in India, we had something called, or we still have, and it is not only true of India, it is everywhere. We have this thing called Varna, right? Or we have this thing called Ashrama, the stages of life, जिसमें हम कहते हैं कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, right? और वर्णा में कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. What are these? These are this is the outer way in which we have organized our outer collective life. कि कुछ लोग हर समाज में होंगे जो who are more inclined, उनके अंदर से स्वभाव उनका ऐसा है और उनका स्वधर्मा फिर वैसा ही बन जाता है, which is to pursue higher knowledge. They are more of the Brahmin type. Or even higher, pure, disinterested intellectuals are more of the Brahmin type. There are some who are more of the heroic type, जो adventure loving temperament है. They are more of the Kshatriya kind. They will be mostly drawn to work professions where it is more natural to express through courageous, through adventure, through heroism. चाहे वो मिलिट्री में हो या इवन एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस में हो, where you have to take bold decisions and stick by them. Then there will be people who are more drawn to generating prosperity for everyone, for themselves and for everyone. They are actually much more larger in number because it is just simply that's how human psychology has worked itself out. उसके लिए काफी थोड़ा डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा, so I'm skipping that right now. They would be the more of the Vaishya temperament, who will be drawn to works in, for example, in agriculture, in producing things. They will set up factories, they will employ people, they will set up institutions, they will generate wealth, but through that process, they are generating prosperity, abundance, and material harmony for the entire society. And then there will be even a larger number of people who may not have the ability to conceive of something on their own, but they are perfect
in terms of following instructions and doing really good work. And they would be the one in the Shudra, they will be more of the Shudra temperament. So the point is that all this was done to create some sort of a collective order for society to progress harmoniously. This would be the body of a culture. या जो हमने पॉलिटिकल सिस्टम्स ट्राई किए, मोनार्की, जनपद, जब इंडियन हिस्ट्री में हम, पता नहीं हिस्ट्री टीचर्स हैं यहाँ पे या नहीं, जो जब एक जनपद का सिस्टम, महाजनपद, 16 महाजनपद जिसको हम कहते हैं इंडिया में थे मौर्यन एम्पायर के टाइम पे, what kind of governance structure was tried out? There was monarchy also, there was democracy also at the local level. So those are again part of the body aspect of culture, right? So in every which way, when we say we have to connect with the culture at some level for our own healthy, harmonious self identity, we should be, to whatever extent possible, try to connect with each aspect of this culture. बहुत जगह पे क्या होता है इंडिया में या किसी, क्योंकि मैं बहुत साल बाहर रही हूँ, so this became sort of part of my experience, or when we meet people who are not familiar with India or anything Indian, typically what they understand is कि इंडिया में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कास्ट सिस्टम, without, and we have all in our ignorance accepted that कि हाँ है, but what truly is the spirit behind it, we have not explored much unless we make an effort to understand कि the original idea of varna vyavastha, how it got corrupted into the modern evil that some people say is caste system. So Sri Aurobindo has written so much about how that happened, why that happened, what is the need of the hour, what needs to be done. How was he able to articulate that? Because he understood the spirit of the culture, right? So as teachers, it becomes our responsibility before we discuss these things with our students, या लोग question जब लेके आते हैं students या parents या generally people in community, to understand the deeper ideas behind this. So does that make sense? Do we have an idea of why it is important to connect with the spirit of the culture? And at every level, because actually India में रहा क्या है कि spirit is the starting point, soul is the starting point, और soul की truth को, soul के experience को express करने के लिए हमारे यहाँ पे art forms, scientific knowledge, mathematical knowledge, medical knowledge, सब चीजें, even warfare for example, जो हमारे यहाँ weapons बनाए जाते थे, they were also rishis. The new technologies of creating, manufacturing weapons, आज हम कहते हैं, बात करते हैं, missiles हैं, BrahMos है, ये है, वो है, but there was a time in India we had this kind of knowledge also, right? Ramayana and Mahabharata are examples. They talk about what kind of weapons there were and what kind of research people were doing in creating new kinds of, manufacturing new kinds of weaponry, for example. They were also rishis, people who were working on that. So secular or spiritual knowledge का इस तरह से divide नहीं था जो अब modern life में आ गया. So the point I'm trying to make is we have to first understand the soul of a culture to whatever extent we can. Then the biggest thing that we all need to do is to connect with the mind of the culture, because it is through mind that the soul expresses. And especially as educators, it becomes even more important because that is the way we can reach out to the students, because they are in that stage where their mind is developing. So really helping them connecting with the mind of the culture becomes very important. And then understanding the spirit behind why we created the outer bodily forms of culture. So I want to give you some examples of how we can do that, first for ourselves and eventually with our students as well. So shall I do that?
या कोई क्वेश्चन है या इस पॉइंट पे बिफोर आई स्टार्ट शोइंग सम पिक्चर्स? Okay, then I'll quickly start with some pictures. Yeah. Is this, I hope this is visible. So this is what I was just talking about. The expression of consciousness of life, which formulates itself in three aspects: soul, mind, and body. So I've just some pictures, but I want to quickly go to the pictures which can be, so for example, soul. When we talk of the soul of a culture, so in this category of how Sri Aurobindo defines soul, he uses 4 words: the highest thought of a people, the highest ideal, the upward will. जो हम लोग किस तरह से अपनी चेतना में ऊपर उठना चाहते हैं, that is also part of the soul. And finally, the soul's aspiration. दिस इज वेयर एम ऑफ लाइफ, आपके मैम ने कहा कि जो हम एम ऑफ लाइफ क्या समझते हैं उससे हम कल्चर अंडरस्टैंड करते हैं. तो इंडिया में इट इज वेरी क्लियर टू यूनाइट विद द अल्टीमेट डिवाइन इज द हाईएस्ट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ. करेक्ट? सो दैट इज द एस्पिरेशन ऑफ द सोल. सो अब इसको एक्सप्रेस कैसे किया गया है? सो हेयर आई हैव पुट वन पिक्चर. आई एम श्योर सम ऑफ यू कैन रिकॉग्नाइज what is happening here. Anybody would like to take a guess? समुद्र मंथन. Yes, समुद्र मंथन, right? तो अब सब जैसे ये समुद्र मंथन की स्टोरी का बेसिक सबको पता है, करेक्ट? Is there anybody who does not know that? क्योंकि I don't want to go into the story. I would probably maybe just, if those of you who are not familiar with the story, you can just do a basic Google and learn what this idea of Samudra Manthan is. But the one point that I want to emphasize is कि ये जो एक कहानी हमें बचपन से सुनते आए हैं कि देवताओं और असुरों ने मिल के समुद्र का मंथन किया था, इसको अमृत मंथन भी कहते हैं. What were they looking for? They were looking for some nectar of immortality. Immortality, अमृत जो कभी भी लाइफ को पेरिश नहीं होने देगा. अब इसके डिटेल में हम बहुत फिलोसॉफिकल ट्रूथ्स में जा सकते हैं. व्हाट इज दिस अमृत दैट दे आर सर्चिंग फॉर? व्हाट काइंड ऑफ इमॉर्टैलिटी? फिजिकल इमॉर्टैलिटी, मेंटल इमॉर्टैलिटी, क्या इमॉर्टैलिटी की बात है? और हु आर दीज देवताज, हु आर दी असुराज? ये देवता असुर बाहर है या हमारे अंदर ही हैं? इस स्टोरी को कई लेवल पे एम्फसाइज इंटरप्रेट किया जा सकता है. अब ये नीचे एक कछुआ है. व्हाट डज दैट टॉर्टोइज रिप्रेजेंट? व्हाट इज द माउंटेन ऑन विच द रोप दैट इज अ स्नेक, व्हाट डज दैट रिप्रेजेंट? ऑल दैट कैन बी अंडरस्टूड and interpreted to understand all of these things. What was the thought behind it? What is the ideal being represented? What is the soul's aspiration that is being expressed through this particular painting? So this is how the point that I was making, how a soul gets expressed through a very concrete artwork. So those of you who are art teachers, or those of you who are history teachers, or you are whatever area, social studies that you are teaching, or you are coordinating different activities. So let's just take one example of this one painting and how in an integral education way we can use this. So first of all, very basic things. अगर body से शुरू करें, this is a particular kind of painting called hard painting. Hard painting, which is very unique to Rajasthan, which is also very unique to, किसी ने point किया था diversity of cultures. It is also very unique to a particular community in Rajasthan, and also in particular, also very particular to, or very unique to, a certain family, a certain clan, a certain lineage जो एक time पे इस तरह की paintings बनाते थे. Only recently, in the last 30-40 years, they have allowed people from other communities
to paint this kind of artwork. So what this tells us is कि highest spiritual thought से बॉडी लेवल पे एक यूनिक कम्युनिटी लेवल पे एक वर्क को कोऑर्डिनेट करना, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दैट कल्चर. द कंटिन्यूटी, जो एक धागा, एक थ्रेड जो चला आ रहा है, जो एक कम्युनिटी लेवल ऑर्गेनाइजेशन को हाईएस्ट स्पिरिचुअल थॉट से कनेक्ट करता है. दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर, because it valued the diversity, and yet in its own ways it also valued the one idea, the highest spiritual aspiration, which unites all the diverse people, all the diverse communities. In fact, before this particular style of painting became open to people from outside of the Joshi communities, ये सब थीम्स भी नहीं बनाई जाती थी. उनके जो अपने रबड़ी कम्युनिटी के जो अपने देवता हैं, उनके ही ऊपर स्टोरीज के ऊपर इस तरह की पेंटिंग बनाई जाती थी. सो अगेन व्हेन यू स्टार्ट स्टडिंग दिस, इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग. सो टेकिंग वन एग्जांपल ऑफ द मेंटल क्रिएशन, माइंड्स क्रिएशन ऑफ अ पीपल, और इसमें देखिए नियर टू फार का भी चल रहा है. फ्रॉम योर ओन राजस्थान यू कैन ओपन अप इन सो मेनी वेज स्टूडेंट्स माइंड्स टू दैट. I want to show you few more examples. This is what I was talking about, mind, जिसमें mind में ये सब creative self expression, intelligence, imagination, literature, poetry, ये सब आता है. Now this is a picture that I have of रानी की वाव. एक स्टेपवेल है गुजरात में, पाटन जगह में. ये स्टेपवेल की यूनिकनेस क्या है, और इसको आप अपने लोकल जोधपुर के कल्चर से भी कनेक्ट कर सकते हैं. आई हैव अ पिक्चर ऑफ दैट एज वेल. अगेन, एज टीचर्स, if we are curious, we would like to know what is happening in this stepwell, the history of this stepwell, why it remained intact when so many other beautiful structures in India got spoiled. And the location where this stepwell is, it is also the place where the very unique patola saris, Patan patola saris, are being woven, which each of these saris is about, I don't know, takes 6 months to a year to make. And what is very interesting is that the weavers of that particular sari go to this stepwell to actually copy the designs that you will see at the borders of this stepwell. So again, the continuity of the mind with the body, right? With the very material culture, everything is there. I'll show you a few more and then we'll take a small break. This is the body of a culture, the practical, the socio-political, economic systems, the economic, for example, the market systems that we had. हमारे यहाँ पे weekly heart का एक concept है. क्यों आया होगा? Again, going a little deeper, finding the connection, all that is very interesting. So that is the body of a culture. So this is what I said, and I'll take a break, small break after this. I mean, we'll have a little discussion, and then I'll show you a few more things connected with, more with, Rajasthan connection. So spirituality, as I said, I mean, as Aurobindo says, is the master key of Indian mind. So there are two key aspects. And other than this is spirituality, the master key. And the second most important thing is to understand what is dharma. And this is very important for us as educators, because we have been given this work to facilitate the younger generation's connection with their collective identity, with their culture. So to understand what dharma is, how it is not religion. मैम ने बात किया था स्वधर्मा का. What is swadharma? What is raj dharma? What is the dharma of a soldier? What is the dharma of a teacher? What is the dharma of a student, a parent? Is there anything common to all? What is this thing called Sanatan Dharma, which is not same as Hinduism? अगर इंडियन कल्चर, जो भी कुछ इंडियन कल्चर में
हम समझते हैं कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन इस सनातन धर्म के बीज से रहा है. So to explore that connection without making it a religious, in a narrow sense, all that requires a deep understanding. So I want to just take few minutes to explore this idea of dharma before I um, give any more examples. So what is dharma? धर्म, धर्म से हम समझते क्या है? ये तो मैंने कह दिया धर्म रिलीजन नहीं है, तो फिर क्या है धर्म? Yes. Your personal nature. पर्सनल नेचर, ओके. और role, the responsibility which you as an individual need Okay. to ओके, चलो ड्यूटी का एस्पेक्ट, ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेक्ट. और कोई चीज और? Discipline to be followed again. Instead of doing practice and डिसिप्लिन, ओके, या ओके. सो धर्म जो शब्द है धर्म, वो आया है धृ धातु से, जिससे और भी शब्द आते हैं. धरती सबसे कॉमन शब्द, धरती हम सब जानते हैं. धरती, धरा. व्हाट डज धरती डू? only give. हाँ, इट होल्ड्स अस. अगर धरती नहीं होगी तो हम लटक रहे होंगे. Only करेक्ट. gives. हाँ, it gives a base, correct. It's something on which we are able to sustain ourselves, fixed एक तरह से है. So धर्म का भी वही है. धर्म is that which holds us in a sustainable way, holds the entirety of us together, and dharma is also that to which we hold on to. So we must hold on to if we want to have a right life. So Sri Aurobindo says dharma is the right law of inner living, जिसमें नेचर भी आ जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाएगी, ड्यूटी भी आ जाएगा, एथिक्स भी आ जाएगा, इवन राइट भी आ जाएगा कि ये मेरा राइट है. आई शुड हैव, आई कैन एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम द लार्जर यूनिवर्स अराउंड मी. All these things will be there, but ultimately it will be with the idea of that how do I make my life whole, holistic, integral, complete, purn. So dharma is that which is the right law of inner life, in inner living. So इस तरह से as a student, हम जब स्टूडेंट को बात करें कि ये आपका धर्म है, to listen, to pay attention in the classroom, उससे पहले हमें ये देखना है हमारा एज अ टीचर क्या धर्म है. टू व्हाट एक्सटेंट आई एम एबल टू एंगेज द स्टूडेंट so that he or she would be willing to listen to me, right? अब स्कूल से घर गए हैं, तो what is my धर्म as a parent, for example, or as a daughter, or as a daughter-in-law, या जो भी हमारा उसमें है. But there might also come a point when जैसे अर्जुन की लाइफ में हुआ, वो मैं बहुत ऊंचा एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट अल्टीमेटली वी आर ऑल अर्जुनाज इन मेकिंग. कृष्ण तो शायद हो सकता है कुछ लाइफ टाइम्स लग जाए, बट अर्जुना इन मेकिंग तो जल्दी हमें प्रोग्रेस करना पड़ेगा. वेयर we know I am born in a kshatriya, I have been trained as a warrior, I know what all has happened, but अब तक मुझे अपना सब धर्म पता था मुझे क्या करना है. But a situation comes in life and I get a dilemma कि अब मेरा धर्म क्या है, right? अब मुझे क्या करना है. So sometimes that situation can come. Sri Aurobindo gives one example of a judge कि एक जज है जिसको अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं रही डेथ पेनल्टी साइन करने में, बट देयर कम्स अ टाइम व्हेन ही सेज कि नाउ आई कैन नॉट डू, because this is against my inner nature which has evolved to that level कि अब मैं किसी को, I understand कि मेरा, this is not my job, my work to write this death sentence or to give capital punishment to this thing, because who am I? There is some other wisdom which is running the whole show.
जब इस तरह की सिचुएशन आती है, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट धर्म भी इवॉल्व होता है. हमारी डेफिनेशन ऑफ धर्म ऑल्सो चेंजेस, राइट? सो हायर हैज टू be the right law of conduct. So dharma is stable, dharma is eternal, but dharma is also evolving, right? So हमारा लाइफ में जो अब एक बच्चा है, उसका एक धर्म है, वो बहुत जिद करके कुछ मांग लेगा, हम दे भी देंगे, लेकिन वही चीज अगर 15 साल का होने के बाद भी करेगा, हम कहेंगे नहीं, अब तुम ये नहीं कर सकते, because your dharma has also evolved. Same way, we have to understand how this dharma evolves in us as we go through different experiences, and yet we always have to hold on to some stable basis. तो इस तरह से धर्म को डिफाइन किया जाता है. But right now we are not doing just a philosophy class. We are also taking into account what it means from an educational point of view. How do we connect with culture? So two things. One, spirituality as the master key. हमेशा कुछ भी देखें, try to understand what might have been the spirit which is being expressed through this outer form. चाहे वो poetry हो, चाहे वो literature हो, चाहे वो कुछ भी हो. And secondly, इसमें धर्म का क्या connection है? In my behavior, in my action, in my choices, in my interaction with others. So these two things are key aspects of Indian culture. Let me quickly go to few more things. Okay, so yes, sorry, this is what I was just saying. Dharma is derived from the root dhra, which means to hold, that which we hold on to, and also that which holds together our inner and outer lives and movements. So it's the right inner law of living. It lifts an individual beyond the essentially animal impulses of the physical and vital being towards a true manhood. So typically जो भी हमारी desires, जो हम किसी ने बात कही कि ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब इसी एस्पेक्ट का पार्ट है कि कुछ भी आया मन में वो कर दिया, कह दिया, वो नहीं चलेगा. धर्म क्या कहता है, राइट? What is the dharmic thing to do? But like I said, this can be a very long discussion, maybe for some other time. But let's just see how we can do our dharma as an educator in connect with the idea of connecting with culture. So I'm sure you all recognize this picture, right? ये आप ही के शहर की है पिक्चर. कोई जानता है? हाँ, तूर जी का झालरा कहते हैं इसको शायद. जी का झालरा. यस, राइट, तूर जी का झालरा. मान लीजिए आपने एज अ ग्रुप, एज अ क्लास टीचर, you take your students to some sort of like a field trip to this place. I don't know how popular this is in the, जैसे वो travel websites लिखती है ना, 10 must see things in Jodhpur, but I felt very drawn to, जितना मैंने रिसर्च किया जोधपुर का, this seems like a very interesting architectural structure. But by keeping this, like starting with from near to far, अपने ही शहर में क्या है, how many things, in how many ways we can engage students to connect with all aspects of the culture. Material level pe to, yes, it is a water conservation thing, right? It's supposed to be one of the earliest forms of rainwater harvesting systems that were very popular in India. And इसके साथ साथ आप लोकल और इंडियन हिस्ट्री की भी बात कर सकते हैं. In fact, there are evidences of our very sophisticated hydraulic water engineering systems that India had developed. धोलावीरा से भी मिले हैं, मोहनजोदारो से भी मिले हैं, बट गुजरात राजस्थान में तो बहुत ज्यादा इस तरह के स्टेपवेल स्ट्रक्चर्स रहे हैं. पहले मैंने रानी की वाव की बात की थी जो पाटन में है गुजरात में, but this is right in our, in your Jodhpur area. So local history, किसने बनवाया, क्यों बनवाया गया. अब उसी के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे हमेशा हर
कम्युनिटी में वाटर स्ट्रक्चर्स, इस तरह के स्ट्रक्चर्स लोकल राजा बनवाया करते थे या लोकल रानियां बनवाया करती थी. मेनी प्लेसेस इट्स एक्चुअली क्वींस हु हैव बिल्ट स्टेप वेल्स. तो इससे हम राज धर्म की भी बात कर सकते हैं. व्हाट इज द धर्म ऑफ अ किंग, ऑफ एन somebody who is in governance, you know, our administration, our whoever is, you know, our district collectors, our chief ministers, our prime ministers, our parliamentarians. So उस तरह से social studies की भी integration हो सकती है. Also, so that is the dharma of the governors, you know, the governments or administrators. But what about the dharma of people? So if you study a little bit, जितना मैंने पढ़ा, I'm sure local resources बहुत ज़्यादा होंगे, but जितना मैं इंटरनेट पे देख पाई, there was a time this was abandoned, बहुत खराब रहता था. In the last few decades, it has been cleaned up and people are visiting it. And in fact, आसपास से बच्चे afternoons में जाके डुबकी भी लगाते हैं. So what is the dharma of praja? To keep such water structures clean, safe, उसमें कचरा कूड़ा नहीं डालना, right? So many things, the sensitivity we can bring by talking about that, helping them connect with the heritage, connecting with the culture. Then on a deeper level, we can also talk about, and first as teachers must learn ourselves and then bring awareness to the students about the Indian knowledge of, you know, of what are these Panch Bhutas, 5 elements kya hai? What is the significance of water as the Panchabhuta, as an element? How is it connected with the sense of taste? What does water symbolize? श्री औरोबिंदो कई कई जगह पे बात करते हैं कि जब किसी को विजन, किसी योगी को विजन आती है वाटर की, water represents a plane of consciousness, but it is water that is in an ocean, that is in a sea, which is, you know, vaster. Contained water, what does that represent? Consciousness limited to the individual being. हमारे अंदर क्या चल रहा है? So that's why when we sit near water, we try to go within. So many things, you know, from the spirit, spiritual, soul level, mental level पे. First of all, architecture, right? How was this designed? How has it lasted for so long? All these things can be addressed, and the connection with the culture can be facilitated both for ourselves and for students. I'll take one or two more example and then we'll have a little interaction. ये भी आप ही की राजस्थान की हिस्ट्री से connected है. At least the painting is. Anybody recognizes what is happening here? स्वामित्री हरिदास जी है, हाँ जी, तानसेन जी और जहाँ पर अकबर जी. यस एब्सोल्युटली. तो इसके पीछे एक स्टोरी है, करेक्ट? अब उस स्टोरी के माध्यम से अब बहुत कुछ हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने कल्चर से. सी द थिंग इज कि वी एक्चुअली नो ऑल दीज थिंग्स, वी जस्ट सीम टू फॉरगेट that because we are not conscious about that connection. So the point is to become conscious of these little anecdotes, little stories, and to use that effectively in our classrooms. So a big simple सी story है. Tansen was one of the Navratnas in the court of Akbar. Akbar was so appreciative of Tansen singing. He thought कि इनसे अच्छा तो कोई हो नहीं सकता. But then Tansen says, no, you haven't heard my guru. And who is your guru? My guru is Swami Haridas. Can I go and meet him? Akbar says. He says, no, he doesn't meet people. Especially he doesn't like to, you know, he lives on his own little forest hut and he doesn't meet, especially kings. He does not need any royal patronage like I do. He doesn't hunger for fame. So Akbar says, okay, I will not go as Akbar. I will go as your servant, right? So they come and some days pass
And one day in the morning, Akbar and Tansen both listened beautiful singing coming through some corner in the forest. And Tansen tells Akbar that my guru is singing. So he says, let's go, let's go. And so the painter, which is this particular painting, what he has described is that the king who is standing behind, because he's projecting himself as a servant, that is why he's standing behind Tansen, the person who's clad in white, and Swami Haridas is sitting with his no uttariya, no upper garment, right? So all this is being depicted through this beautiful painting done in what came to be known as Jaipur hybrid Kishangarh school of miniature painting. Kishangarh came out of Jodhpur's history. Kishangarh's style of painting was very interesting because it was very much inspired by the Ajanta style of painting. Elongated human figures, very expressive eyes, expression on the face. So many things can be discussed by just this, talking about connecting with one painting in a deeper way. So and anyway, as the story goes, when Swami Haridas, when Akbar goes there and Tansen goes there, Swami Haridas ji, who was singing up to then, stops and he says, "Aao Akbar, aao Badshah, tum aa gaye." So Akbar says, "How did you recognize me?" Swami ji says, "I had known this right from the beginning. I just let you play the game because I knew that your intention was to, you came with the right intention to hear me sing. And I don't sing for any king except when I am moved to sing for my divine." So music as sadhana, that aspect can also be discussed, can also be brought up in our awareness through looking at this one painting. So I just want to stop here because I have several more examples like that, but I want to give ourselves a few minutes to see how we are feeling in terms of this approach to connecting with culture. So anybody, any reflection, sharing, any question at this point about this approach to making conscious connections with culture, especially in the context of education, which has to be not presented in compartmentalized silos, but in an integrated way. जो डांस टीचर्स जो हैं आपके ग्रुप में कथक एंड भरतनाट्यम, so just because in a way in the school setting it is always considered that जो art teachers हैं, music teachers हैं, they are probably they are supposed to be the guardians and champions of cultural exposure to children. So generally ये responsibility उन पे आती है, but I know that you all know कि NEP में अभी there is such a great emphasis being given on integrating arts with other subjects. So nothing should be offered, nothing should be given to students separated from other subjects. So if you were to, you teach Kathak, right? Bharatnatyam, sorry. Yeah, whatever, I mean, whatever dance form you use, you teach. The point is, music, right? So when you are working with children, are you only talking about music, or are you also talking about or dance, or are you also talking about the history behind it, the stories behind it, the great exponents of Kathak and Bharatnatyam, or a little bit of that, जिसमें local history भी आएगी, Indian history भी आएगी,
और पेंटिंग भी आएगी, बिकॉज नथिंग, हमारे इंडिया में तो एक्चुअली आर्ट को कभी कंपार्टमेंटलाइज किया ही नहीं गया था। एक स्टोरी है, पौराणिक स्टोरी, जिसमें एक राजा ऋषि के पास जाता है, आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू मेक स्कल्पचर ऑफ गॉड्स, हाउ टू मेक स्टैच्यूज ऑफ डीएटीज। तो वो उसको पहले कहते हैं, पहले आपको पेंटिंग सीखनी होगी। फिर पेंटिंग सीख लिया, अब आपको संगीत सीखना होगा, अब आपको नृत्य सीखना होगा। सो द पॉइंट ऑफ द स्टोरी इज कि ऑल आर्ट्स आर इंटीग्रेटेड, राइट? सो हाउ डू यू ब्रिंग दैट टू क्लासरूम्स? अगर उसके बारे में आप थोड़ा कुछ कहना चाहें। जैसे कोई हमारा कोई सॉन्ग है, उसका हिस्ट्री है, जैसे कि हम कोई देवी देवताओं के ऊपर बताते हैं, या अपनी भारतीय परंपरा के ऊपर, या साउथ इंडियन तमिल फोक, तो उसके बारे में पहले बताया जाता है। जैसे कि हमारे जो करनास हैं, साउथ इंडियन जो भित्तियां हैं, दीवार है, उस पे एक अलग टाइप के कर्ण है जो पोस्चर बनाए हुए हैं। तो पहले क्या होता था कि जैसे कोई एक स्ट्रक्चर खड़ा है और वो एक ऐसा पोज लिया हुआ है। अभी ऐसा होता है कि हमने सिर्फ पिक्चर्स देखी है, लेकिन उस पिक्चर्स को बनाने के लिए उनको मूवमेंट किया जाता है। तो जैसे कि वो एक तल पुष्प पर लेकर ही बैठा हुआ है हाथ में, और फूल रखे हुए हैं, लेकिन अब वो हमने तो भित्तियों में यही देखा है, किताबों में भी यही देखा है। लेकिन जब हमने रिसर्च और हमारे जो गुरु हैं वो जब हमें समझाते हैं, तो हम बच्चों को भी यही बताते हैं कि ये पोस्चर इस तल पुष्प पुट है, लेकिन इसको कैसे क्रिएट किया कि मूवमेंट के साथ देना है। तो जैसे हम आए, ऐसा फूल तोड़ा और लाए, फिर इधर से लाए और ऐसा लाइक दिस दिखाया और ऐसा प्रेजेंट किया, तो ये तो पिक्चर बन गई, पेंटिंग बन गई। बट इसको क्रिएट करने के लिए एक पूरा मोमेंट बच्चों को बताए, तो बच्चे समझ रहे हैं कि हमको फ्लावर पिक करना है, फिर लाना है और फिर थोड़ा सजाकर और प्रेजेंट करना है ना। तो जैसे कोई स्टोरी होता है तो हम उसको ऐसा बताते हैं, उसके बाद ही कोई सॉन्ग उनको सुनाया जाता है। जब वो सॉन्ग सुनते हैं, तो चूंकि हमारा साउथ इंडियन डांस है, तमिल में है, तो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया जाता है। पूरा पूरा नहीं समझ में आएगा, बोर मारेगा, बट थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके उनको थोड़ा स्टोरी से कनेक्ट किया जाता है, और उसके बाद बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट लगता है कि हाँ, हम कुछ कर रहे हैं। तो वो जो करण है या जो हमारी भित्तियों पे पिक्चर है, वो नॉट पिक्चर, बट उसके साथ पूरा मूवमेंट है, पूरा एक सॉन्ग भी प्रेजेंट होता है, उस तरीके से उनको कराया जाता है। Yes, beautiful, beautiful. So you can continue to do this and you can take it even further. अगर आप मान लीजिए और जैसे आई डोंट नो, मैथमेटिक्स की टीचर्स के साथ आप अगर इंटीग्रेट करें, सो यू नो अगेन, या साइंस की टीचर के साथ, कि जैसे पुष्प का आपने बात किया, करेक्ट, अब उसको साइंस से भी प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट किया जा सकता है। क्योंकि आप ऐसे स्कूल में काम कर रहे हैं जो कि श्री औरोबिंदो की विजन से इंस्पायर्ड है, तो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लावर्स, उस आइडिया से भी, क्योंकि उससे वो इनर वर्क बन जाएगा कि व्हाट इज दिस एक्ट ऑफ फ्लावर ऑफरिंग फ्लावर मीन, व्हाट इज द कॉन्शियसनेस ऑफ ईच फ्लावर, राइट? तो उसमें आप मदर का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लावर्स भी ला सकते हैं, द पर्टिकुलर फ्लावर। So many things. Again, the point is to become conscious of why we are doing what we are doing, so that we ourselves first, and through us, students become consciously connected with the spirit of the culture and see the common thread, कि कुछ भी ऐसे randomly नहीं कर दिया था. There is very deep philosophy or deep thought behind it. हम समुद्र मंथन की बात कर रहे थे. We also know कि समुद्र मंथन एक बहुत philosophical deep level पे story है. But we also know this one fact कि this was the first ever theater play performed in humanity. नाट्य शास्त्र speaks about that कि जब पहला ड्रामा बना, that was समुद्र मंथन, और ब्रह्मा ने कहा कि let this be the first play, और जब पहली बार वो परफॉर्म हुआ तो असुर बड़े नाराज हो गए
वो हॉल छोड़ के चले गए, थिएटर हॉल। और ये कि हमें बहुत नेगेटिवली रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ये कहते हैं, उसके बाद ये एक अंडरस्टैंडिंग आई कि अ थिएटर, अ ड्रामा शुड नॉट बी सीन एज दिस कि ये मैं ऑफेंड हो गया या ये नेगेटिव है या ये पॉजिटिव है, बट इट इज सपोज टू entertain everyone, inform everyone, entertain, inform and elevate, and nobody will feel कि ये हमें गलत रिप्रेजेंट किया गया है। तो अब इसी राइट, अब आजकल के मॉडर्न कल्चर में ये बातें कितना बच्चे करते हैं, उसमें ऐसा रिप्रेजेंट हुआ, ये हुआ, वो हुआ, बट द रूट्स ऑफ इट गो बैक टू द वेरी फर्स्ट ड्रामा परफॉर्म्ड, राइट? सो अगेन टू सी, हेल्प स्टूडेंट्स सी दिस। सॉरी, बच्चों के अंदर भी कि कोई कैरेक्टर नेगेटिव है, जैसे कि हम देवी दिखा रहे हैं, उसमें किसी एक बच्चे को हमको असर भी बताना होता है, तो कोई उसके लिए राजी नहीं होता है कि नहीं ये मुझे नहीं बनना है, बट उसे वो थोड़ा बताना पड़ता है कि ये एक कहानी है जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो हमारे अंदर जो बुरे थॉट्स हैं, हम जरूरी नहीं है कि असुर हैं, लेकिन हम अपनी बैड थॉट्स को भी निकाल सकते हैं, इसके थ्रू बैड थॉट्स बता सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम वो पुराना असुर ही बता रहे हैं। यस, तो अच्छी चीज के साथ बस तो एक शो कर रहे हैं और कुछ नहीं। यस, अगर हम अच्छा ही अच्छा दिखाते रहेंगे तो बुरा चीज के बारे में पता नहीं रहेगा। इसलिए अच्छा के साथ बुरा तो बताना ही होता है, क्योंकि जो है एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो वो दोनों ही शो होते हैं। तो स्टोरी के थ्रू करेक्ट, यस। और अगर हम श्री अरबिंदो की दृष्टि से देखें तो वो तो ये भी कहते हैं कि ये जो होस्टाइल फोर्सेस हैं, नेगेटिव फोर्सेस हैं, दे इन अ वे हेल्प पुश द इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस फर्दर, तो वो प्रोग्रेस में हेल्प करते हैं। करेक्ट, सेम चीज एक हिस्ट्री टीचर भी यूज कर सकती है, सेम आइडिया, व्हेन यू आर स्टडिंग complicated chapters in history, right? कि invasions, attacks on India, अब उसको भी किस तरह से पढ़ाया जाए कि एक साइड का ट्रुथ नहीं है, दूसरी साइड का ट्रुथ नहीं है, बट इस तरह से हायर आइडियल से पढ़ाया जाए, सो एवरीथिंग बिकम्स more conscious way of connecting with our history, our past. आपने ये, अभी हम क्योंकि बात कर रहे हैं, it is not just connected with dance. एक मैं छोटा सा एग्जांपल और दूंगी and then we can maybe stop. I had collected many pictures, but क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं अभी नेगेटिव, ये वाली पिक्चर, I don't know if you all can see this clearly, but this is, again, this is a painting style. See, we just say कि राजस्थानी मुगल पेंटिंग या राजस्थानी राजपूत पेंटिंग, उसमें बहुत डाइवर्सिटी है. This particular painting style is unique to जोधपुर. This is called जोधपुर style of miniature painting. और इसकी खासियत ये रही थी कि एक तो रामायण was one of their favorite subjects. इसकी again they were inspired by Ajanta style, little bit by Mughal style of miniature painting, but they were very big on depicting nature and depicting structures that they saw in their local area. अब ये जो सीन रिप्रेजेंट हो रहा है ये वाली वध का है. यहाँ पे अगर देखें, बहुत ही they literally are miniature paintings. यहाँ पे वाली का वध हुआ है और उसके बाद वाली वध के बाद जो रामायण में है, कुछ समय मॉनसून आ जाता है जब राम और लक्ष्मण को वेट करना होता है बिफोर दे कैन कंटिन्यू विद देयर सर्च ऑफ फॉर सीता. तो हनुमान को जाने से पहले कुछ पीरियड ऑफ वेटिंग है. दिस इज द पार्ट वेयर दे आर सपोज टू बी सिटिंग. ये राम है, ब्लू कलर्ड जो फिगर है, और साथ में लक्ष्मण है. बट ऑल द स्ट्रक्चर दैट यू सी ऑल अराउंड, जो भी लाइफ फॉर्म्स हैं, एलिफेंट्स हैं, ऊपर मोर हैं, ये ऊपर ब्लैक सारे क्लाउड्स और मॉनसून और ये सब है, ये सब जो स्ट्रक्चर है, दिस इज नॉट एट ऑल कनेक्टेड विद द प्लेस which is being described in Valmiki Ramayan, which is closer to Kishkindha, जिसको किष्किंधा कहते हैं, which is closer to what is now Hampi. वहां पे तो रॉक्स हैं, माउंटेन्स हैं, आप वहां जाएं तो वहां पे वो कहेंगे यहाँ पे राम और लक्ष्मण ने से वेट किया था.
So again, the point is, when we look at a work of art like this, we can go into so many details. एक तो पेंटिंग का डिटेल हुआ, लोकल हिस्ट्री का, साथ में यूनिवर्सल अपना नेशनल लेवल पे किस तरह से रामायण को यूज किया गया टू कनेक्ट डाइवर्स पीपल. सो अगेन व्हेन वी लुक एट रामायण या महाभारत या स्टोरीज फ्रॉम रामायण एंड महाभारत, all of these can be used to help us understand the human condition. इंडिया में ये बहुत चर्चा रहती है कि ये अगर ये पढ़ाया जाए तो ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शन तो नहीं है. नो, बट इफ वी स्टडी ऑल दीज थिंग्स थ्रू द मीडियम ऑफ आर्ट, कल्चर, पोएट्री, लिटरेचर, with this aim to bring out the psychological motivations for why people act the way they do, who is in right, who is in wrong, what is the right dharmic action, was killing Wali that way the right dharmic action. इस तरह के जब questions हम put up करते हैं for ourselves and for our students, we engage more consciously with our history, with our culture, with at every level, soul, mind, and body. So I'm going to stop sharing here since we are actually we are out of time. But I had few more examples like that from music, from मैंने आप पंचभूत की बात की. हमारे यहाँ एक और कॉन्सेप्ट है पंच ऋण का, 5 debts that we owe. Who do we owe these debts to? Again, we can go deeper into the study of that. और उसमें मैंने एक सिंपल सी एक पेंटिंग ली थी शिवाजी की. ये श्री अरबिंदो के अपना इंसाइट है. When Sri Aurobindo established, he wrote so many things on national education. He established Bengal National College. He was the founder principal of that, which then later on became what is today known as Jodhpur University. Bengal National College में curriculum में he was taking very personal interest, क्या पढ़ाया जाए. So he gave the examples of incorporating stories of Shivaji and Akbar. Why he talked about it? Because by understanding that, we understand the debt that we owe to our ancestors. तो इसी में आप अगर वो एक छोटी सी स्टोरी लेके, एक छोटा सा पॉइंट लेके ऋण की बात करें, जो हमारे धर्म में, सनातन धर्म में पंच ऋण को कहा गया है. देवताओं के लिए क्या हमारा ऋण है, ऋषियों के लिए क्या ऋण है, पितरों के लिए, एंसेस्टर्स के लिए क्या ऋण है, फेलो ह्यूमन बीइंग्स के लिए, नृ के लिए क्या ऋण है, और भूता, अवर एलिमेंटल बीइंग्स, जैसे हमने वाटर की बात की थी, पंचभूतास के लिए क्या ऋण है. अगेन, बिकॉज द आइडिया इज इंडियन कल्चर हैज ऑलवेज सीन थिंग्स इन टोटैलिटी, और मॉडर्न एजुकेशन ने सब चीजों को डिवाइड कर दिया है. दैट इज वाई वी हैव सच फ्रैक्चर्ड आइडेंटिटीज इन इंडिया. सो फ्रॉम इंडिविजुअल टू कॉस्मोस, ये पूरा जो थ्रेड है ना, उस थ्रेड को हमें समझना है. फर्स्ट फॉर अवर ओन हार्मोनियस हेल्दी आइडेंटिटी, एंड देन imparting that through our experience, through our work as teachers to the younger generation. This, in my view, is how we can consciously connect with culture. So I'll stop here. Everyone's very quiet. I think you've given us a lot to think about. Yeah, it's a So- very huge thing, huge topic. Very deep, actually. I wasn't expecting it to be so wide and also connecting. I think everyone has also felt that, and I want to thank you very much. I hope that some of this, what you have discussed today and the other days, we will be able to bring into our teaching, and a small start, which I hope will fructify when you come next year. Yeah. And we yeah. should be able to show you some change.
Yes, no, but Yes. these things take time. I mean, for all of us, it's always, it's like an eye-opening thing. Anywhere, any new thing we see, क्योंकि वो एक चाबी पकड़ा दी है ना श्री अरबिंदो ने, अब कुछ भी ऐसा ऊपरी लेवल से देखा नहीं जाता. So it's about, totally, it's that eye that he opens up through his writings. मैं तो ये कहूंगी कि ये कंपल्सरी रीडिंग होनी चाहिए हमारी यूनिवर्सिटीज में. Some of his essays on Indian culture, very important. I think so. It was really thought-provoking also, and I hope that we can put some of it into practice in our teaching, Yeah. especially the social science. But Yes. actually, all teachers, as you said, everything is connected at the Yes. heart. Yes, everything. Mathematics, sciences, सब चीजें. Economics तो बहुत ज्यादा. अर्थशास्त्र is very important to know that, So, yes, so but we'll continue some of these conversations Yes, whenever Mother very wills. much. So, yes, thank you so much. And I will send you the whole PDF, Miradi. So you'll see there are more pictures there. We'd like to share it with everybody, the other teachers who couldn't. Yes. So when you send me that, there are a few other people really interested, so that those who you have. Yes. Yes, definitely. When you send us the deck. Yeah, yeah. All right. Okay, so thank you so much. Have a beautiful rest of the day and a good weekend ahead. Namaste. Thank you. Thank you, really, thank you very much. Thank you, Meera. I'll talk to you later. Oh, acha. What happened? Can I close? Can I close the meeting? Yes, I think so, because everyone has one task to do. Yeah, that's fine. That's fine. I'll send you the recordings once we, just edit them a little bit, and I'll share both first day and third day together in a few days with you. Yes, please. First, second, third, yeah. Second day, I don't have, sorry. First and third day. Oh, yeah. Missed that. Yeah. Okay, first, yeah. Okay, I'll send it to you in a few days. Namaste. Thank you. Thank you.